तो डिस्कस करबा मॉक टेस्ट 15. First question, soil mechanics. The shear strength of soil. Shear strength उपरो already गोटे question पचारथिला जोटा खाली पचारथिला shear strength रो formula. Shear strength of a soil. Shear strength formula होछ कोन C plus sigma n tan phi. जदि modified Coulomb रो formula देखिबा normal stress बदलले कोन आसीबो total stress बदलले effective stress आसीबो. Effective stress माने total stress minus pore water pressure. ताले कोन हबो A B C D भितरु increases with increase in the normal stress जदि बढ़िबो shear strength बढ़िबो. Option A ठीक अछि. Is proportional to the cohesion of the soil. C ऊपर भी depend करछि. Is generally known as the strength of the soil. A B C सब correct. That is your all of the above. Question 2. The property of soil mass which permits the seepage of water through its interconnecting voids. ताको हमें कोन कहबा voids देकी पानी पास करिवार प्रॉपर्टी को हमें कोन कहबा permeability. Option B. Permeability होउछ ओटे प्रॉपर्टी, seepage होउछ ओटे phenomenon. Permeability दी प्रकार में टेस्ट कोनते हमर लैब रे गोटे होउछि constant head permeability test आ गोटे होउछि falling head permeability test. Constant head permeability test कोनते coarse grained soil पई, falling head permeability test कोनते fine grained soil पई. 3 number. The most commonly used disinfectant for drinking water throughout the world. सबुठु भलो disinfectant होउछ क्लोरीन जोरा में यूज कोनते नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. 4 number. The maximum permissible fluorine content for domestic supply. Domestic supply पाई maximum पचाची. Maximum होउछ 1.5 ppm माने मिलीग्राम पर लीटर. 5. Carbon monoxide CO in air कहा को अफेक्ट करे कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड कोड मैक्सिमम बाहर थाए मोटर व्हीकल लो एग्जॉस्ट रु बाहर थाए कार्बन मोनोक्साइड हार्ट को अफेक्ट करता है. 6. The factor responsible for purification of sewage in river. Sewage in river को फैक्टर अफेक्ट करे co-factor responsible for the purification. Dissolved oxygen in water DO term से भी हमें डिफाइन करंती sewage रो purification. Temperature, turbulence हैला तो केते डाइल्यूशन हैला गोटे sewage रे all of the above होबा. 7. The preventive measure for water and air pollution is. Water आउ air pollution लो कौन preventive measure गोटे होचे public awareness, industrial cooperation taken by legislative council, law made by legislative council. Environmental Protection Act केबे आसला 1986. 1986 Environment Protection Act आसला 1986 टे. सेमते एयर प्रिवेंशन और पॉल्यूशन एक्ट आसला 1981 रे. वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट आसला केबे 1974 आसला ताको मॉडिफाई कि 1977 ले आसला. तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव. 8. The serious health hazard caused by radioactive emission. Radioactive emission द्वारा कौन होता है न्यूक्लियर वेस्ट जोटा हैला. लाइफ स्पैन शॉर्ट जेनेटिक इफेक्ट दीटा ठीक है माने ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. 9. The standard BOD of water is taken for 5 days. BOD 5. BOD कौन बायोडिग्रेडेबल ना नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल. COD होचे
बीओडी बड़ ना सीओडी बड़? सीओडी 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 बीओडी सर बीओडी 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 बड़ ना सीओडी बड़? सीओडी सीओडी बड़। बीओडी होची खाली बायोडिग्रेडेबल, सीओडी होची बोथ। बोथ 10. The quantity of liquid waste which flows in sewers during the period of rainfall is known as? स्टोर रेनफॉल टाइम में ताको हमें कौन कहबा? स्टॉर्म सीवेज। इजी सेट अछि जेटा 10टा क्वेश्चन कौन खाली इजी इजी आसलानी। 11. The long term rise in the average temperature of the earth's climate system is termed as? अर्थ रो टेम्परेचर बढ़ुची ताको हमें कौन कहबा? ग्लोबल वार्मिंग। करेंट टॉपिक वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू आमर फॉसिल फ्यूल जो बर्निंग करूचंती से सब पई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ुची। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा ग्लासियर गुडा हमरो मेल्ट होउची। 12. The main cause of acid rain को दिटा केमिकल पई हेइ थाए? H2SO4 आउ HNO3 दिटा मेन रेस्पोंसिबल फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन ला pH रो वैल्यू केते? लेस देन 5.6. The main cause of the acid rain ला मेन कॉज कोन? इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल एउटु तमरे मेनली बाहरता H2SO4 HNO3. डिफॉरेस्टेशन यूज ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन कल्टीवेशन ऑल ऑफ द अबव ताले मेन हो तमरो इंडस्ट्रियल जो बर्निंग होची कारण हमको केमिकल छुडा सब कोड भारियो इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ द कोल आउ अदर फॉसिल फ्यूल दैट्स आर द मेन जे सेउटु हम मेन एसिड गुडा सेउटु बाहरता है। 13. Pick up the correct statement from the following. First कोच painting is measured in square meter. ठीक अछि भूल अछि? ठीक अछि ठीक अछि। Plastering is measured in square meter. ठीक अछि। Glazing is measured in square meter. त माने all of the above. सर 12 नंबर तो फेल देई न थांता ताहले ऑल ऑफ द होई थांता। 12 नंबर जदी कोन देई न थांता? मेन कॉज देई न थांता खाली थाना कॉज खाली जदी कॉज देई थांता देन यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स भी होची। डिफॉरेस्टेशन भी हेई परिबो गोटे। डिफॉरेस्टेशन ले एक्चुअली एसिड सहित किसी रिलेशन नाही तो सेति पई डिफॉरेस्टेशन तो हबनी। डिफॉरेस्टेशन ले कोन वर्षा माने रेयर हबो बट से कोची एसिड रेन हबो का पई तो डिफॉरेस्टेशन गछ न रहले कोन एसिड रेन कोन कॉज करबो कि एसिड रेन का पई कॉज करबो केमिकल सुडा बर्निंग करबा द्वारा तो डिफॉरेस्टेशन माने जंगल नाही तो गछ कोन एसिड कोन नै जिवो कि एमे तो किछ नै गछ कोन करबो वर्षा करेबो तो मेन एसिड रेन होची ऑप्शन ए। 1 bag cement is equal to 0.0347 cubic meter. What is the plan area of cement bag? Plan area of cement bag केते? Height of cement bag केते? 18 हाइट 0.18 Height होची 18 centimeter. Plan area केते? 0.3 मीटर स्क्वायर 3000 centimeter square. Plan area 0.0347 meter cube. 1 meter cube यदि हमें M15 काम करछंती 6.34 बैग सीमेंट हमको दरकार 15. For brick work no deduction is made for the area of opening up to 0.1 square meter 0.1 meter square. 16. Revised estimate is required due to revised estimate हमको कौन पाई दरकार addition of the new work हेले तो रिवाइज करबा सेते खाली सप्लीमेंटरी करबा एडिशन करबा डिडक्शन ऑफ existing work changes of design फर्स्ट को जो changes of quantity of materials rates quantity of the materials ए change जो हो गला ता रेट भी चेंज तो ऑप्शन ए होछ सुटेबल। एस्टिमेट केते प्रकार प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्यूब रेट एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट सप्लीमेंटरी एस्टिमेट ऑप्शन ए। 17. The dry volume of concrete required for 100 meter square of
2.5 सेंटीमीटर थिक 124 डीपीसी काम देइछि तो कंक्रीट पचार कंक्रीट माने 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट पाई केते दरकार ड्राई मटेरियल्स 1.54 से पचार ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड डीपीसी काम देइछि आगे फास्ट कोन करबो 2.5 सेंटीमीटर देइछि थिकनेस 124 देइछि ग्रेड दे देइछि ताले आगे वेट क्वांटिटी केते दरकार तको बाहर करियो वेट क्वांटिटी केते दरकार 100 मीटर स्क्वायर इनटू 2.5 सेंटीमीटर बा 0.025 मीटर 100 into 0.025 केते आसीयो 2.5 मीटर क्यूब ता माने 2.5 मीटर क्यूब रो हमको वेट कंक्रीट दरकार आ सेथिरे मल्टीप्लाई करबा 1.54 into 2.5 1.54 into 2.5 केते आछी देखो डी केते आछी आंसर ऑप्शन डी 3.85 3.85 मीटर क्यूब 18 in economical digging sectional area of excavation is dash sectional area of banking equal to जितला हम गोटे चैनल सेक्शन करबा चैनल सेक्शन जतला हम करबा सपोज हम ट्रापेजोइडल करछन तो बैंक रो सेक्शनल एरिया जहा हबो सेति हम जति हम खोलिथिबा सेति की हे जो दैट इज और इक्वल टू 19 for first class brickwork the thickness in mm of mortar joint shall not be less than what 5 mm 5 mm thickness of the mortar joint shall be greater than 5 mm hela they just shall not be less than what that is your 5 mm 20 if the formation level of a highway has a uniform gradient for a particular length and the ground is also having a longitudinal slope the earthwork may be calculated by को फॉर्मूला अनुसार हम earthwork कैलकुलेशन करि परियो जदि हमकु गोटे यूनिफॉर्म ग्रेडिएंट देइछि ऑल हाईवे तयारी करछन ऑल सर मिड सेक्शन फॉर्मूला हे परिबो ट्रापेजोइडल फॉर्मूला हे परिबो पिस्मोडल फॉर्मूला हे परिबो तो earthwork माने हम वॉल्यूम कैलकुलेशन करबा सबुथिरे हम वॉल्यूम कैलकुलेशन कर परिबा ऑप्शन डी the brick work is not measured in cubic meter partition wall रे हमें ताको मीटर स्क्वायर मेजर करते पार्टीशन वॉल माने कोन केते थिकनेस हाफ ब्रिक थिकनेस नहीं हाफ ब्रिक थिकनेस the extra length required for two semicircular hooks of a reinforcement bar semicircular 18 है केते आसीबो 18d 18 23 the main function of construction management is ऑल construction management main function होची कोन planning organizing directing that is your all of the above ये सेट ताले इजी पड़ी होची ताले 15 तो सब पूरा अधिक अधिक मार्क रखथिबो मॉक टेस्ट 15 ने हाईएस्ट केते जायतला 98 something 98 तथापि 100 क्रॉस हेई नहीं जाए तम माने पाठ पढनो लास्ट टाइम पिला माने 130 प्लस रखुतले 25 टा क्वेश्चन तो पूरा इजी आसलानी 50 मार्क एउठू a critical activity in a project management network has critical activity में Zero. कहा कहबा जोटा होई सबटो मैक्सिमम पाथ चार टीई अधिक आसीबो आ फ्लोट होची 0 गोटे होची फ्लोट ए काली क्लास रे पढाई छी आउटा होची कोन थला स्लैक होची एक्टिविटी ना इवेंट एक्टिविटी क्रिटिकल स्लैक टा होची इवेंट आ फ्लोट टा होची एक्टिविटी पॉट होची तुम्हारो इवेंट ओरिएंटेड पीईआरटी प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक
तो E for event program हम POT होची event oriented, CPM होची activity oriented. activity होची बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करे, whole project होची whole project नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे. फ्लोट माने होची तम पाखरे केते फ्रीडम अछि. गोटे कामटी को एक्सपेक्टेड टाइम अच्छे 5 दिन बट 3 दिन तुमको सारी देल तुम 2 दिन तुम पाखरे फ्रीडम अच्छे. 25. The estimated time required to complete an activity is known as गोटे duration, एक्टिविटी को सारिया ପାଇଁ जो टाइम दरकार ताको मैं कोन करबा ड्यूरेशन. फ्लोट मान तो होची फ्रीडम. ड्यूरेशन. बार चार्ट by Gantt chart. Bar chart is drawn for Time बार to चार्ट activity. x रे कोन रहइबो y रे कोन रहइबो टाइम वर्सेस एक्टिविटी. टाइम time versus वर्सेस activity. एक्टिविटी. बार चार्ट ताको हेनरी गैंट से ताको गैंट चार्ट बोली मते कोन. पॉट रो फुल फॉर्म पचाछ आउ इजी क्वेश्चन कोन रहइबो. Program equation प्रोग्राम tribute. प्रोग्राम हला तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. PERT प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. पॉटा कोन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ना डिटरमिनिस्टिक अप्रोच. Probabilistic. पॉट होचे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. प्रोबेबिलिस्टिक माने टाइम होचे अनसर्टन जेमिति होचे रिसर्च प्रोजेक्ट. पॉट रे तीनटा टाइम एस्टिमेट थाई. गोटे होचे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम आउट होचे मोस्ट लाइकली टाइम. सेठो हम बाहर करंती एक्सपेक्टेड टाइम दैट इज T नॉट प्लस 4 TM प्लस TP बाय 6. 28. Which of the following is a dummy activity? Dummy activity माने logical purpose ପାଇଁ ଆଉ grammatical error ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ. Grammatical error ଆଉ logical purpose ପାଇଁ यूज करନ୍ତି dummy activity जोटा कि neither require resources or time. Awaiting for arrival concrete Awaiting. materials. एटा हेइदियो गोटे dummy activity. Waiting for arrival of concrete materials. Dummy माने जहा ପାଇଁ कोनसे टाइम बा रिसोर्सेस दरकार नै. The final technical authority of a project. Final authority की Chief engineer. chief engineer. chief engineer जहा साइन रहइबो. chief engineer पाखरे फुल पावर थिबो. तांकर वर्क लिमिट किछ नथिबो किंतु बाकी मानकर वर्क लिमिट थाए. जेमिति हमरो ए डबल हे गला कि जेई हे गला तांको सब एतिक लिमिट पन्द से काम कर परिबे किंतु चीफ इंजीनियर रो कोनोसी वर्क लिमिट न थाए. हेड को प्री टेंडर स्टेज रिक्वायर्स व्हाट? All of this. All of the above. Acquisition of land, selection of site, finalization of design and preparation estimate, all of the above. A, B, C, D. 31. The artificial activity which indicates that an activity following it cannot be started unless the preceding activity is complete. Preceding activity no सरिया जाय से activity start हे पारे. The water obtained from tube wells is known as Subsurface. Subsurface water. water. top surface water. 33. The method adopted for removing bushes, branches, debris from wastewater. कौन कह जाए? Screening. 66 मार्क तो तुम एउट रखि सारनी 33 टा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन माने एटा हो तुमर जो एथरो जो क्वेश्चन पडला खाली थ्योरी वाला क्वेश्चन सेही टाइप रे पेपरटा रही. The presence of sodium chloride in water Substance the water. softens the water. 35. The maximum consumption of water peak flow occurs at 8 Next to 10. 8 to 10 am कारण एटा होची ऑफिस आवर. 36. The order of water cannot be determined by
Osmoscope. Order of water cannot be determined by cannot Can be. अच्छा Can can be be Can be. Osmoscope. can be ହେଲେ ତ Osmoscope. osmoscope can be determined by test and order होची osmoscope acceptable limit होची केते 1 ton rejection limit होची 3 ton Return. 37 for wall built in cement mortar 1:6 the minimum thickness for a single story building is 10 centimeter. 20 20 ना 10 centimeter 10. 10. minimum पचारची ना minimum पचारची single story building रो minimum thickness पचारची 10 centimeter a cavity wall is constructed to resist cavity wall माने तमरो गुटे रहइबो outer lip outer रहइबो inner lip Dampness. मझे रहइबो gap thermal insulation provide करिवो sound proof provide करिवो dampness को भी prevent करिवो to resist the dampness Assam is situated in which seismic zone of India Zone 5. Zone 5. 5. ओडिशा Odisha 5. ओडिशा भी 5 आसाम ओडिशा सेम एटा होची बीआईएस स्टैंडर्ड वैल्यू उडा सब सेस्मिक वैल्यू होची ओडिशा कोथरे आसीबो 2 sir. ओडिशा जोन 3 3. आसाम जदि 5 रे आउची ओडिशा केन 5 रे आसीबो Zone 3 sir. आसाम जोन 3 ओडा ए उडा थिला जानचो ए फॉर आसाम ऑयल उडा क्वेश्चन पड़े हाईवे रे आया अच्छी बोर्ड है. उडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पड़ितला ए फॉर व्हाट जोन 2 गारो आसाम ना ओडिशा ओडिशा होची जोन 3 आसाम होची जोन 5 द टर्म FAR floor area ratio while fixing the column ties special care should be taken in column ties को जेतरा हम फिक्स करिबा को जगह रे Yes, sir. गोटे होचे कॉलम रो मिड पोर्शन ले तो करिवो कॉलम रो मिड पोर्शन ले तो स्पेशल केयर दो पड़िबो आठ होची बीम कॉलम रो जॉइंट both A and B the width of landing should not be less than stair width Fair width. stair width minimum रखिबो जति तम स्टेयर केस width रखिबो सेति रखिबो minimum width of the landing 43 seasoning of timber seasoning हमें कम पाई करंती to remove the sap moisture केते रहबा दरकार Improve. कोरे good timber 10 to 12%. 10 to 12% seasoning पाई defects due to seasoning पाई कौन सब defects देखा जाए Dry twist rot, fiber bow ये सब डिफेक्ट देखा जाए ड्राई रॉट होची फंगस पाई Fungus. ड्राई रॉट वेट रॉट ये सब होची फंगस पाई ब्लू स्टेन सीजनिंग ऑफ टिम्बर कौन करे Improve Improve strength. the strength properties. the strength properties of the timber. improve the strength properties of the timber option B 44 as per the Indian Standard Institute the actual size of the modular brick केते 1999. 1999. which of the following materials is used for damp proofing work Bitumen. damp proofing ପାଇଁ Bitumen. bitumen यूज कर Bitumen. normally government क्वार्टर छात पर देखिबो bitumen लेयर पडिथो कळा कळा लेयर damp proofing ପାଇଁ 46 pick up the incorrect statement from the following एमान भितर incorrect कोड हम देखिबा in a king post toss एटा होची queen post ये होची king post queen post ता माने अधिका लेंथ पन हम यूज कर परिबा incorrect पचासी a king post toss one vertical post used
तापर पचाछि इन क्वीन पोस्ट वर्टिकल तो रहिबो क्वीन पोस्ट तो एइबो बॉक्स टाइप रो एटा होछि क्वीन पोस्ट तो वन वर्टिकल पोस्ट माने एटा होछि वन वर्टिकल पोस्ट तो क्वीन पोस्ट वर्टिकल रहिबो नाही त माने इनकर्ड माने बी ही इनकर्ड होछि 47 traffic volume study is carried out to Option B, sir. option B determine B. the relate D Sir, all of the above 46 All of the above. 46 टा हला ऑप्शन बी हला इन ए क्वीन पोस्ट वन वर्टिकल क्वीन पोस्ट रो स्ट्रक्चर होछि गोटे बॉक्स टाइप रो एथिरे कोन से वर्टिकल मेंबर वर्टिकल होछि एटा जोटा किंग रे रहइबो क्वीन पोस्ट से कोछ कोडा इनकर्ड देइतला से क्वीन पोस्ट वन वर्टिकल रहइबो नाही से कोछ रहइबो तो बीटा इनकर्ड Sir, option C टा कोन? ऑप्शन सी कोछि That that cross. cross consist of verticals and diagonals verticals और diagonals बने बोल तो डायरेक्ट अच्छा। डायगोनल भी रहइबो और वर्टिकल भी रहइबो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी है कोन ऑल ऑफ द अबव सब ठीक होतले 48 अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी केबे एस्टैब्लिश हेतला 1934. 1934 जयकर कमिटी 1927. 27. 1927. सेंट्रल रोड फंड 1939. 29. इंडियन रोड कांग्रेस 1934 34. Motor Vehicle CRRI Act 1939. 1951 1953. What? It is 1950. प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना 2001 2001. 2000 ना 2001 2000. प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना होची 2000 मोटर व्हीकल एक्ट 1939. 39. मोटर व्हीकल एक्ट केबे पास हेतला 1939. आउ के आंसर 1937 1937 नहीं 1939 1939. according to IRC recommendation the centrifugal force कौन थिला P is equal to mv square upon r centrifugal force बाहर को पके दो गाड़ी को centrifugal force corresponding to 3/4 of the velocity is balanced by centrifugal force is balanced by कौन थिला for elevation for elevation option B centrifugal force is balanced by super elevation 49 desirable side distance is equal to twice the stopping side Twice of the stopping side. twice of the stopping side distance overtaking side distance ले minimum केते Five. desirable केते 5 times of SS. 5 times of the OSD ना SSD SS. overtaking side distance overtaking side distance रो 5 times of SS. five SSD. मिनिमम 3 SSD और मैक्सिमम 5 SSD एको को आछे overtaking zone minimum हो जे 3 maximum हो जे desirable हो जे 5 50 in whole circle bearing system तो सिंपल क्वेश्चन देता है एटा हो जे साउथ टुवर्ड्स द ईस्ट ए एंगल टा हो जे देतला 25 ताले कोन करबो 180 रो खाली माइनस कर दबो -25. Option B. 150. 154 45 180 रो खाली माइनस कर दबो when the angular and linear measurements are equally precise in traversing the balancing of a traverse is done by Transit. Bowditch rule अनुसार linear measurement is directly proportional to
LO root over angular measurement is inversely proportional to LO root over according to Bowdy's rule. Bowdy's rule अनुसार correction हमें केमिति apply करते 1 by summation of the latitude into summation of the length into summation of the latitude CL. 52. A footing 3 into 1.5 meter in a plan transmits a pressure दे दीजिए 160 kilonewton per meter square on a cohesive soil having modulus of the elasticity देइछि mu रो value देइछि. What is the immediate settlement? Immediate settlement खाली formula apply करिवो SI रो formula that is just pressure into B whole into 1 minus mu रो square into कौन थिला गोटे थिला influence factor divided by E रो value I थिला कौन influence factor. तो influence factor केते पुट करिवो influence factor रो value दे दीजिए 1.52 ताले SI is equal to Q होची 160 into width होची केते 1.5 whole into 1 minus mu देइछि 0.48 रो square into 1.52 divided by 8 into 10 to the 4. देखो ये फॉर्मूला जଣା अछि किंतु तथापि क्वेश्चन डाउट लागियो कारण कैलकुलेशन होछि तो ए सब क्वेश्चन को गोल बुले के रखियो लास्ट को करियो स्टार्टिंग जदी ये क्वेश्चन पछे पड़ी जिवो बाकी इजी इजी क्वेश्चन सब मिसै देखि देलो फॉर्मूला आसुछि किंतु कैलकुलेशन डिफिकल्ट अछि आ एग्जाम रे एज इट इज क्वेश्चन रहिबो जोटा कि 4-5 टा क्वेश्चन एमि थिबो जाको सब जଣା थिबो किंतु कैलकुलेशन डिफिकल्ट थिबो ताको सबले गोल बुले के लास्ट को रखियो केते आछन आंसर हां मो कोन नाम कोन 3.51 3.51 53. Which one of the following consists of horizontal and vertical location of certain points by linear and angular measurements and is made to determine the natural features of the country? Natural features माने कौन topography? Cadastral होची केमिति cadastral होची boundary. natural topography Cadastral होची to define the individual property. Cadastral होची boundary. A line AB between station A and B was measured as 348.28 using a 20 meter tape. माने एटा capital L dash दे देला small l दे देला 20 meter tape 2 short by 0 point माने small l dash भी दे देला that is 20 minus 0.05. What is the correct length? Correct into correct equal to wrong into wrong. Correct into correct equal to wrong into wrong. तो correct केते पचाछि that is a 348.28 into 347.41 option C. Correct into correct equal to wrong into wrong. Correction due to standard length. 55. The labeling is carried out between two stations P and Q. आगे कौन करिवो सजै के रखि देबो point P out होची Q separated by 1000 meter. Separated by 1000 meter. The back side reading is noted as 0.70 meter on the station P. तामाने स्टेशन P ऊपर हमें पाई जिबा बैक साइड रीडिंग स्टेशन Q रो जदि हमें रिड्यूस लेवल जणा अछि जोडा को होची बेंचमार्क ताले हमें हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पाई जिबा ताले एटा को नोट करि रखो बेंचमार्क देछि 240 बैक साइड देछि 0.7 ताले फास्ट काम हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट केते भारियो ताले 240.7 plus height of the instrument भारियोला. Next, the fourth side reading is taken on a intermediate point and the value is 1.25. ताले जो भी intermediate point आसुची तार RL केमिति बाहर करिवो height of the instrument को माइनस कर दबो 240.7 रु माइनस करिवो 1.25. एटा जो वैल्यू बाहरला एटा होची इंटरमीडिएट पॉइंट रो RL केता आसुची देखो 100 रु 2 गला 4 239.45 239.45 एटा होची इंटरमीडिएट पॉइंट रो RL P रो RL तो क्वेश्चन देइछि 240 ता भीतर गोटे इंटरमीडिएट पॉइंट होची जार RL बाहरला 239.45. Then the instrument is shifted to a new location and the backside is taken as on the intermediate point 0.85. तापर अगेन पुनी कोन करबा
इंटरमीडिएट पॉइंट रे बैक साइड जो बाहरला तार बेंच तार हमर रिड्यूस लेवल जणा अछि तो एथिरे पुणी आमे कोन करबा बैक साइड जति भाला को मिसेबा 0.85 हैला तापर हम कोन करबा न्यू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाहर करबा 239.45 प्लस 0.85 केते अछि देखो 3 हेले 240.3 240.3 80 85 ये 130 आसीजिवो 240.3 240.3 होची न्यू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तापर कहूची फोर्थ साइड रीडिंग टेकन ऑन द स्टेशन क्यू तब एथु खाली माइनस करबो 1.10 1.10 माइनस करबो काको बुझा पड़लन को आउथरे कह देबी 239.2 बुझा पड़ला ना बुझा पड़लन का बुझियंतु देखो तापे आउटे भलसे डायग्राम करबे पड़ियो फास्ट माने कि चलो तीनटा पॉइंट अछंती फास्ट होची पी पॉइंट तापर होची गोटे इंटरमीडिएट पॉइंट सपोज आर तापर होची क्यू पॉइंट एमाने को भी लेवल ले थाई परंत हमको जणा नै को लेवल ले अछंती तो आमे कोन करले इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करले तो एठी तो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करले फास्ट हमें कोन करबा एठी गोटे स्टाफ धरिबा पी पॉइंट रे हमर रिड्यूस लेवल जणा अछि दैट इज जो 240 बेंचमार्क सेठी जो स्टाफ रखिले तो सेठी हमें जो बैक साइड पाइले दैट इज योर 0.7 ता माने फास्ट हमें कोन करबा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाहर करतो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट केते भाला हमर 240.7 भाला तापर नेक्स्ट कोन करबा जो इंटरमीडिएट पॉइंट ऊपर स्टाफ रखी की सेथिर हमें कोन पाइले फोर्थ साइड केते पाइले अलग अलग सो एलिवेशन ए टाइप एलिवेशन थी बोले तो आर पॉइंट ऊपर जोड़ा होची इंटरमीडिएट पॉइंट सेथिरे हमें तळे स्टाफ को रखिले तो सेथिरे हमें केते पाइले 0.7 थिला तारो केते थिला फोर्थ साइड 1 पॉइंट केते उडथिला 1.25 1.25 थिला यार फोर्थ साइड तो हमें कोन करबा ए जो आर पॉइंट रो रिड्यूस टेबल बाहर करबा केमिन बाहर करबा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 240.7 240.7 minus 1.25 minus 1.25 हैला तो 240.7 टू 1.25 माइनस कले रिड्यूस टेबल पाइ जिवो 239.45 बर्तमान आर पॉइंट रे में कोन पाइ गले आरएल पाइ गले 239.45 तापर से कहूची इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट कले इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट करी की एठी प्लेस कले तो इंस्ट्रूमेंट को जतले शिफ्ट कले जो पॉइंट रे लास्ट हमें चेंज करथिबा सेही पॉइंट रे हमको पुणी बी बैक साइड बाहर करबा ताले ए पॉइंट रे अगेन पुणी हमें कोन कहले यार आरएल अछि केते 239.45 पुणी सेही पॉइंट रे बैक साइड दे देला केते 0.85 पुणी अगेन हमें हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाहर करबा दैट इज योर रिड्यूस लेवल बा बेंचमार्क प्लस बैक साइड 239.45 प्लस 0.85 अगेन हमें बाहर कले हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो एटा भाला केते 230 ना 240 ना केते हां 240.30 भाला अगेन हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पाइले तापर से कहूची क्यू ऊपर गोटे स्टाफ रखी की हमें तारो बैक साइड माने तारो फोर्थ साइड बाहर कले दैट इज 1.10 बोले क्यू पॉइंट रो आरएल केते को ताले सिंपल कोन करिवो 240.30 रु माइनस करिवो 1.10 1.1 3 1 गला 2 239.2 239.2 बुझा पड़ला बे क्लियर बड़ो क्वेश्चन है किछ नहीं 239.2 होच आंसर ऑप्शन ए in map versus aerial photograph due to symbolic representation the clarity of details is more on map than a photo डिटेलिंग अधिका कोठी थाए मैप रे अधिका डिटेलिंग थाए हैला ड्यू टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्लैरिटी अधिका कोठी मिले मैप रे मिले मैप रे बेस read the following information and answer the two items that follow the chainage of the intersection point of two straight is chainage देछि केते chainage माने सबोडे 0 रो स्टार्ट करियो कोन 56 रो बी एंड सी तो सेम देछ ना
Option 66 तो हमें जाइना थी और 56 B and C 56. सेम ऑप्शन B and C सेम ऑप्शन केमिति गोटे होची मोर गोटे होची लेस More on map than photo. मोर Less ऑन on मैप photo देन ऑन ए than फोटो photo. आउट देची लेस ऑन ए Less on फोटो photo देन than ए on मैप map. हाँ हाँ ठीक होची दीटा सेम ऑप्शन लो Okay. दीटा सेम ऑप्शन होची मीनिंग तो दिजों सेम ताले क्वेश्चन को आते देखिए in map versus aerial photograph due to symbolic representation the quality फास्ट कौन देची मैप देची फास्ट देची मैप वर्सेस फोटो तो मैप रो फास्ट आंसर रहइबो तापर फोटो रो सेकंड आंसर तो सही अनुसार ऑप्शन क्वेश्चन पचासी मैप को जदि हमें फोटो सहित कंपेयर करबा ताहले मैप रो कोन हबो फोटो रो कोन हबो मैप रो अधिका हबो फोटो रो कम हबो ताले आंसर टा सही बडी हबो कि नहीं आगे मैप आसीबो तापर फोटो आसीबो तो ऑप्शन बी Okay. ये कौन सॉल्यूशन दे दीजिए सो द लेंथ ऑफ द कर्व क्वेश्चन भी बड़ा अछि रीड द फॉलोइंग चेन्नस देछि चेन्नस देछि माने एमिति टाइपिंग करछन आंसर भी दे दिछन द चेन्नस ऑफ द इंटरसेक्शन एग्जाम रे इबडी हेले बढ़िया ग्रेस मार्क जो क्वेश्चन टा माने डिफिकल्ट दिबो सही क्वेश्चन रे इबडी आसेले भलो द चेन्नस ऑफ ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्टेट्स चेन्नस माने 0 टू स्टार्ट चेन्नस देछि 1060 मीटर तो एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन माने डेल्टा दे देला 120 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ ए सर्क रेडियस माने r दे देला 570 मीटर एंड पेग इंटरवल इज 30 मीटर पेग इंटरवल देला 30 मीटर ताले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कर्व पचारछि लेंथ ऑफ माने स्मॉल l पचारछि लेंथ ऑफ द कर्व होछि कोन 2 पाई r by 360 into delta 2 pi r by 360 into delta that is the length of the curve तो बस लेंथ ऑफ द कर्व बाहर करिवो 2 पाई r into r तो वैल्यू दे देछि डेल्टा वैल्यू दे देछि खाली बाहर करिवो पाई बाई 180 बा केते हिजबो एटा 570 मल्टीप्लाई करिवो डेल्टा रे वैल्यू देछि केते 120 केते होछि लेंथ तो दे दिए सॉल्यूशन pi by 3 into 570 that is your 195 length of the curve option A 195 ये सब डाटा से किसी दरकार नहीं creep causes रेल ले creep होची कोन longitudinal movement creep होची longitudinal movement कोन हबो all of the above opening of the rail buckling of the track all of the above 59 the longitudinal joints in cement concrete pavements are constructed with a suitable longitudinal movement कौन यूज करा जाए suitable tie bar fiber 60 a kiploid wire has a length देछि 2 meter head over the wire होछि h देछि 1 meter what is the discharge cd रो वैल्यू जदी 0.62 हुए discharge फॉर्मूला कौन 2 by 3 into cd into length into 20 माने रेक्टेंगुलर जोड़ा सेटा s to the power 3 by 2 2 by 3 cd देछि क्वेश्चन है 0.62 into length देछि 2 meter 20 root over into head देछि 1 to the power 3 by 2 केते आछे 3.66 3.66 ऑप्शन बी फॉर्मूला मन रखिबा पड़िबो फॉर्मूला प्रैक्टिस करे पे पड़िबो रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर 61 water flows through a pipe
of 200 mm in diameter. रूट टू जिका केमती सॉल्व करना को क्वेश्चन टा या पूर्वटा फॉर्मूला खाली डिस्चार्ज फॉर्मूला 2 by 3 रूट टू जी into CD root 2 into 9.81 G होचे acceleration due to gravity 9.81 यार रूट ओवर केते आसीबो 2 into 9.81 यार वैल्यू केते आछी 19.6 19.6 माने 20 पाखा पाखी वैल्यू 20 रो रूट ओवर जे केते 4 into 5 रो रूट ओवर केते 2 into root 5 2 into root 5 again root 5 is बाहर करलो 2 रो स्क्वायर हो 4 2 गुणा 4 माने 4.4 पाखा पाखी आसीबो वैल्यू 19.6 रो रूट ओवर केते आसीबो 4.4 आसीबो कि नहीं ओके 61 ने देछि लेंथ देछि 60 मीटर डायमीटर देछि 200 mm वेलोसिटी देछि 2.5 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज द हेड लॉस ड्यू टू ए फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन रो फार्मूला होछि कोन यदि वेलोसिटी देछि fl v स्क्वायर बाय 2gd GD. fl v स्क्वायर बाय 2 into g into d f रो वैल्यू देछि 0.005 l देछि केते 60 मीटर लॉन्ग fl v स्क्वायर v देछि केते 2.5 रो स्क्वायर बाय 2 into 9.81 into 0.2 केते आछि Yes. 0.477. 0.477 ऑप्शन तो मैच करनी व्हाट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यूजिंग द राशि एज्यूम f एटी तालेटी देछि फ्रिक्शन फैक्टर माने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे पे पड़ियो फ्रिक्शन देछि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन देछि तो फ्रिक्शन फैक्टर हेले 4 टाइम्स ऑफ द f ताले एटा देखो हिजो hf is equal to 4 into 1.91. 1.91 ऑप्शन डी Sir, এটা 4 r times is कौन पे equal multiply होला? कारण f देछि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन तो आमे कोन बाहर करियो जो फार्मूला रे f होछि कोन फ्रिक्शन फैक्टर फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 into f लगी नहीं बा जोडा हम नउतले f डैश नउतले माने बगा एठी f डैश जगह रे f खाली दे दिछि A convergent mouthpiece is discharging water under a constant head देछि 5 मीटर if the diameter of the mouthpiece होछि 75 mm then what is the discharge mouthpiece convergent रो discharge रो फार्मूला होछि कोन a into 2 into g into h रो रूट ओवर h होछि हेड जोटा 5 मीटर दे देछि तो q is equal to एरिया केते हिजबो पाई बाय 4 into d स्क्वायर डायमीटर देछि 75 mm तो मीटर रे जदी रखिबो पाई बाय 4 into 0.075 रो स्क्वायर into 2 into 9.81 into 5 रो रूट ओवर दिस इज योर आंसर 43.8. 43.8 ऑप्शन सी स्टार्टिंग 50 टा इजी क्वेश्चन पड़ी जे तापर टिके टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ी छै कैलकुलेशन वाला A submarine which may be supposed to approximate a cylinder 3 meter in diameter and 15 meter long travels submerged at 1.54 meter per second in sea water at 4 degree centigrade. What is the drag exerted on it? Drag force केते पचार drag force तो खाली फॉर्मूला अप्लाई कर देबो CD into into 1 half into rho a d square हैला एरिया केते हे जिवो 3 मीटर डायमीटर 15 into 3. 15 into 3 CD रो वैल्यू तो मु दे देछि 0.7 दे देछि CD रो वैल्यू रो रो वैल्यू दे देछि 1025 वेलोसिटी 1.54 दे देछि केते आछी देखो 0.7 into half whole into 1025 287. 1.54 square 32 32 तो 3 ऑप्शन नहीं 382 38287 option D. ऑप्शन डी
64. Which one of the following is the correct assumption for the derivation of Bernoulli's equation? Bernoulli's equation को equation रो आसे ची वो equation रो integration कले पाइबा Bernoulli's equation Euler equation Bernoulli's equation कौन था P by rho g plus V square by 2g plus Z is equal to constant P by rho g होचे pressure head V square by 2g होचे velocity head बा kinetic head Z होचे हमरो datum head P by rho g plus Z को कहा जाए piezometric head First कौन of सा all, brother, Compressible. Option A. Option A the flow is compressible compressible मान तो रो चेंज करियो Incompressible. flow is steady incompressible non viscous तीनटा तार मेन assumption compressible माने रो चेंज हे जिवो रो चेंज होला आ केमिति पाइबा वैल्यू P by rho g केम पाइबा flow is unsteady. flow is steady रहिबो unsteady ना steady रहिबो Bernoulli's equation तो So Steady steady ରହିବ। ରହିବ। steady रहिबो flow steady रहिबो incompressible रहिबो आ non viscous रहिबो And viscosity is 0. viscosity 0 65. Which one of the following techniques of water distribution in the farms is sometimes called wild flooding? Wild माने free आओ Free floating. free को कहा जाए wild flooding. 66. An 18 mm thick plate of thickness दे दीजिए is joined to a 16 mm thick plate by 200 mm long effective butt weld. What is the strength of joint if a double V butt weld is used? Assume Fe410 grade plates and soft welds दे दीजिए thickness गोटे दीजिए 16 mm length दे दीजिए 200 mm Fe410 मान एठू कौन पाई गलो ultimate tensile strength of the steel होचे 410 Newton per mm square soft weld देइछ माने factor of the safety केते हे जिवो 1.25 First effective area के बाहर करिवो that is your LW into T length into thickness तापर strength बाहर करिवो that is your length into thickness into FU divided by gamma into root 3 put करो design strength होची 200 into 16 into 410 divided by 1.25 into root 3 केते वर्ड 605.987 kilonewton. Option A 605.987 kilonewton. 67. To account for shear deformation, the effective slenderness ratio for battend देइछि माने 1.1 1.1 ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़िथिला ओएसएस जेई The maximum pitch for tension and compression member tension ପାଇଁ केते 12 ना 16 And 16. tension ପାଇଁ होचे 16 compression ପାଇଁ होचे 12 12. 16T or 200 mm whichever is minimum Option A. first 16T Three 16T first 50 ना tension 16T. 16T or 200 mm whichever is less तापर 12T or 200 mm whichever is less 69 a rectangular concrete cantilever beam M25 grade देइछि Fe415 grade देइछि steel रो what is the modular ratio रो formula कोन ES upon EC ES upon EC तो EC हमें केमिति बाहर करियो दी FC के देइछि 5000 root over of FCK. 5000 root over of FCK FCK root over होछि केते 5 हेले एटा केते हिजो 5000 into 5 25,000. 25000 हे जिवो तो ES modular ratio is equal to ऊपर रहला 2 into 10 to the power 5 तळे रहला 25000 केते आछी 8. modular ratio भाला
8 70 an RCC beam having 200 mm wide width ଦେଇଛି 200 mm 400 mm ହେଉଛି effective depth is reinforced with Fe415 grade steel area ଦେଇଛି steel ର 1000 mm square in tension M20 grade of concrete assume करो what is the approximate value of the depth of the neutral axis for the equilibrium forces at the limit state of the collapse x रो डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत कर दो c compression is equal to tension कर देले कौन पाइबा x is equal to 0.87 Fy into area of the steel divided by 0.36 FCK into B तो पुट करो सब फिर तो दे दीजिए x is equal to 0.87 into 415 into 1000 divided by 0.36 into 48 into width दे दीजिए कहते 200 केते आछी 250 ऑप्शन बी 71 a simply supported RCC one way slab for an office floor has clear dimension देइछे 4 मीटर into 10 मीटर with 230 mm देइछे wall all around what is the effective length of the slab effective depth of the slab देइछे 160 mm effective length पचारछे slab रो effective length कौन L naught plus width नहले L naught plus d beam जा slab से effective length दी जन जोड़ा minimum हो जाओ देखिबो clear dimension देइछे 4 into 10 wall thickness देइछे 230 mm effective depth देइछे 160 mm तो आगे केते बाहर करो L naught होची clear span के देइछे 4 4 plus W होची कारो wall 0.230 हेले 0.23 आउट हे जीवो 4 plus 160 mm 0.16 ताले मिनिमम कोटा होची 4.16 टा मिनिमम 16 72 the density of wood used for construction in the ranges between construction ले हमें जो काठ यूज करते तारो डेंसिटी केते डेंसिटी थाए नॉर्मली 1.54 ऑप्शन ए बी हबो ऑप्शन ए तो नहीं B ऑप्शन बी बी हो ऑप्शन बी 73 as per IS 303-10701 the thickness of 5 plywood boards for structural purpose नॉर्मली प्लाईवुड आमे जो करते भिन्नर्स गुड़ा भी यूज करी करते भिन्नर्स गुड़ा ऑड नंबर लखा जाए गोटे हूँ 3टा प्लाईवुड 5टा प्लाईवुड 7टा प्लाईवुड 9टा प्लाईवुड 11टा प्लाई तो 3टा जो यूज कर जाए थिकनेस रखा जाए 3 4 5 6 5 हूँ 5 6 8 9 7 हूँ 9 12 15 16 यही दीटा खाली मन रख 3 5 3 5 आसपार क्वेश्चन तो 5 50 माने कौन रही 6 9 12 तो आसबनी 16 आसबनी 16 19 9 10 15 9 6 9 खाली 3 आउ 5 8 देव शॉर्ट नोट से रखो 3 4 5 6 5 6 8 9 74 consider the following oxides Al2O3 CaO SiO2 which one of the following is correct sequence in increasing order of their percentage analysis for an ordinary Portland cement ordinary Portland cement रे alumina केते हमरो कोन लाइम केते रहिता है 62 रु 67% लाइम होची के कैल्शियम ऑक्साइड तो पचार कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर माने सानो रु बड़ क्रम रे सजे के लिखिबो ताले CaO टा सबुटु लास्ट रे आसीबो 2 आसीबो सबुटु लास्ट रे देखो गोटी ऑप्शन अछि जोटी 2 अछि सबुटु लास्ट रे आउ किछि एनालिसिस करियो दरकार ही नै एग्जाम रे इभोली सॉल्व करियो आगे फाइंड आउट कर दबो देखिबो सब ऑप्शन एलिमिनेट हे जिवो एई भोली क्वेश्चन को सब बेले करियो मैच द फॉलोइंग कारण सेतरे गोटे जदी फाइंड आउट कर देलो तो आराम से आंसर पाइ जिवो 1 3 2 कहार केते परसेंटेज भी कह दियो सिलिका केते 17 25
70 into 22% सिलिका alumina केते 2 to 4. 280. 8%. A cylindrical bar होचे diameter देइचे 25 mm देइचे diameter 1.20 meter होचे तार length is subjected to a longitudinal strain during a tensile test is 4 times the lateral strain माने longitudinal strain होचे 4 times of the lateral strain तो सेठो हमें कौन पाइजो mu पाइजो कि नहीं mu होचे minus of the lateral strain by longitudinal strain तो mu रो वैल्यू केते आसीबो lateral strain होचे 1 longitudinal strain होचे 4 गुणा 1/4 0.25 आसीगला mu diameter देइची length देइची टेक मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी होची e रो वैल्यू दे देइची 1.2 into 10 to the power 5 MPa देन पचारची कोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शियर मॉडुलस देन तो ये सब जिंस दरकार नहीं खाली शियर मॉडुलस पचारची g रो वैल्यू पचारची तो e रो फॉर्मूला कोन 2g होल इनटू 1 प्लस म्यू 2g होल इनटू 1 प्लस म्यू बा 3k होल इनटू 1 माइनस 2 म्यू तो 2g होल इनटू 1 प्लस म्यू तो एटी g रो फॉर्मूला केते पचारची g इज इक्वल टू e बाय 2 होल इनटू 1 प्लस 0.25 केते होछ 48. g होछ शियर मॉडुलस 48 ऑप्शन डी 76 a prismatic bar has a cross section 25 mm into 50 mm and a length is 2 meter if the bar is subjected to an axial tensile force p पडुची 90 kilonewton a bar is elongated by elongation होची 1.5 mm then what is the tensile stress पचारची stress केते पचारची stress is directly proportional to strain so stress is equal to Young's modulus into strain stress is equal to Young's modulus into strain होची change in length by original length तो हमको दरकार stress तो stress is equal to Young's modulus और stress is equal to force by area तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होची 25 into 50 होची क्रॉस सेक्शनल एरिया ताले टेंसाइल स्ट्रेस ते काढिबा टेंसाइल फोर्स केते पडुची 90 किलो न्यूटन तो ऊपर देखो 90 किलो न्यूटन डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होची केते 25 into 50 बाकी एठी कोथि देछि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर देछि ताले न्यूटन को हटेले एठी केते हेजिवो 90 into 10 to the power 3 ऊपर होची 90000 तळे होची 25 into 50 this is your answer 72. 72 what is the ratio of elongation of a rectangular bar due to self weight to the elongation of the total weight of the bar applied at its end elongation of a bar due to self weight ro formula kon gamma l W. square by 2e और एटा Okay. होची delta 1 elongation due to self weight to the elongation if to the total weight of the bar is applied at its end जेतले गुटे बार रो टोटल वेट माने गुटे फोर्स पडुची एट द एंड रे pl upon a तार फॉर्मूला होची कोन elongation of a bar pl upon a तो गामा l स्क्वायर बाय 2ae जगह रे हमें कोन लिख परिबा wl upon 2ae एटा हे जिवो खाली pl upon ae हैला pl upon ae तो l होची लेंथ ऑफ द मेंबर a होची एरिया e होची यंग्स मॉडुलस p upon बस elongation due to से कोचे elongation rectangular bar रे due to self weight to the if the total weight of the bar is applied at its end तो elongation due to self weight होचे wl upon 2ae total weight of the bar जदि end रे पडिला ताले elongation केते हे जिवो wl upon ae pl upon ae जोटा wl upon ae तो एंको दी जंकर रेशियो केते पचारची रेशियो केते 1/2. 1/2. रेशियो हे जिवो केते 1/2 ऑप्शन ए 78
Which one of the following statement is correct? एमानक भितरु को statement correct? dv by dx होची कोन लोड को डिपेंड करछि. dm by dx का साइन कंसीडर करूनी. dm by dx का को रिप्रेजेंट करछि खाली शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करछि. तो ता खाली वार्डिंग सम लिखा हिच पढाउ देखो. Option D, sir. Rate of change of bending moment changes abruptly at the location of the point load. Rate of change of bending moment dm upon dx. dm upon dx. Option B कहूँ the bending moment is 0 at the point where shear force changes sign. Shear force जोड़ी sign change करिवो. Bending moment 0 होबो ना maximum होबो. maximum होबो. ताले B तीन ठीक हो. Option A कहूँ the rate of change of shear force along the length of the beam is equal to bending moment. Rate of change of shear force bending moment में rate of change of bending moment ऑप्शन डी ही ठीक लगुच. ऑप्शन डी ही ठीक अछि. ऑप्शन बी टा कितने ऑप्शन बी का भूल हैला जोठी शियर फोर्स चेंज करिवो साइन सेठी बेंडिंग मोमेंट अधिक आसीबो ना से 0 कहिछि. बेंडिंग मोमेंट एटा कहउछि 0. हम नॉर्मली डायग्राम मने पकाओ. सपोज एटा होछि गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल पडुछि. यार बेंडिंग मोमेंट एई भली आसे कि नै किंतु यार शियर फोर्स केमिति आसी थाए. तो जोठी साइन चेंज कला सेठी कोन आसीछि Maximum. अधिक आछि ना 0 आछि. अधिक आछि. 79. Water budget method is used for the determination of lake evaporation. It is based on Conservation of mass. conservation of mass. Match the following. Match the following गुड़ा आगे करिवला सेगुड़ा सब मार्क्स करी कारण सेटा गोटे जदी पाई गलो ना सब ता बाकी सब खोजे दरकार नै. एके सेगुड़ा गोटे को आगे फाइंड आउट करो. करंट मीटर कोन पे यूज करा जाय. Tipping टा, sir. Tipping C. bucket. Rainfall Tip- intensity. Conventional flow. 2C. करंट मीटर कोन पे यूज करा जाय. Conventional flow. करंट मीटर कोन पे यूज करा जाय वेलोसिटी काढिया पे. क्या? करंट मीटर यूज करा जाय वेलोसिटी काढिया पे. कहार वेलोसिटी स्ट्रीम फ्लो रो वेलोसिटी. आ स्ट्रीम फ्लो माने कोन नदी माने कोन दैट इज ओपन चैनल फ्लो. Open. तो 3 रो ए जदी पाई गलो देखिबो बे ऑप्शन एलिमेंट आराम से हिजु. केतेरा ऑप्शन देखो एलिमेंट हो जाउछ. बीटा ऑप्शन सर बी अछि ए अछि. तो बी रे भी अछि 3 ए ए रे भी. 3 ए 1 सी 1 सी खाली जदी दुईटा हमें चेक कर देबा देन हमें पाइ जबे आंसर. तो दुईटा कोन अछि टिपिंग बकेट. टिपिंग बकेट टा कोन हो रेनफॉल इंटेंसिटी 2c. तो 2c माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो एभली क्वेश्चन जमा एग्जाम रे छाड़ीबोनी जहां अवेलेबल करियो निहाती ठीक हो. 81. Orographic precipitation occurs due to air masses being lifted to higher altitudes by Presence of mountain barrier. presence of mountain. Orographic माने presence of Mountain barrier. Relative humidity. आगे humidity measure करिवार इंस्ट्रूमेंट ना कोन. हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर. आइसोहोम कोन सर हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट ना हो जे हाइग्रोमीटर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कहा कहबा केते एयर प्रेजेंट अछि विथ रेस्पेक्ट टू केते तार मैक्सिमम कैपेबिलिटी एयर रहिबार दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. The ratio of moisture present in air to the capability of air to hold maximum moisture.
Option B. Total degree of static indeterminacy for the bridge truss. Truss रो ds केते पचारछि m plus r minus 2j m plus re minus 2j आगे m होछि कोन नंबर ऑफ द मेंबर्स केटा मेंबर अछि देखिलो 1 2 3 4 5 6 19ଟା 7 19 8 19 तो मेंबर होछि 19 टा रिएक्शन केटा दीटा को हिंज सपोर्ट अछि तो रिएक्शन केटा आसीबो 4टा 4टा आसीबो रिएक्शन जॉइंट केटा अछि देखिलो 10टा जॉइंट 10 टा ताले पुट करो 3 19 plus 4 minus 20 23 minus 20 that is your 3 for the truss shown in the figure the force in the member PQ रे force केते पचारछि method of the joint apply कर परिबो आ method of the section apply कर परिबो PQ रे पचारछि जोडी पर हेडो कट मार दियो तापरे method of the joint बा method of the equilibrium apply कर दियो summation of the भौतिक देखि जଣା पड़िबो जी vertical force को दे 0 मानिबो PQ एटा होची PQ रो फोर्स पचारछि एठी देखो गोटे F फोर्स पड़िछि देखा होची गोटे F फोर्स गोटे तळ को पड़िछि यस सर R पॉइंट को मार्क करो R पॉइंट देखो गोटे F फोर्स गोटे तळ को पड़िछि R पॉइंट रे हैला तो F फोर्स को जदी ऊपर को अछि सर से फोर्स रो डायरेक्शन टा एठी तीर चिन्ह तो भलसे तो इमेज ता देखा जाउनी बट तीर चिन्हटा एठी रहला लागुछि कारण एठी तो कोनसे तीर चिन्ह अछि तळକୁ ରହୁଛି ତୀର ଚିହ୍ନଟା ତଳକୁ ରହୁଛି ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ତଳକୁ ରହୁଛି ଯଦି ମେଥଡ ଅଫ ଯେମିତି ସमेସନ ଅଫ ଦ ଭର୍ଟିକାଲ ଫୋର୍ସ 0 ସमेସନ ଅଫ ଦ ହରାଇଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ 0 ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେନ୍ କେତେ ପାଇବା କ୍ୟୁ ଜଏଣ୍ଟ ଦେଖ କ୍ୟୁ ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ डायगोनाल ପଡୁଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଫ ଦ ସେକ୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦିଅ ଏଠି ଗୋଟେ କଟ୍ ମାର ଦିଅ Q point eta P F of PQ ସେମିତି ଏଠି ଆସିବ ଗୋଟେ F of SR ଏଠି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆସିବ F of SR ତଳକୁ ପଡୁଛି F ଏଟା ହଉଛି S point ତ F of PQ into length କେତେ ଅଛି PQ हम पचारछि ना हमको PQ पचारछि तो F of PQ हमें काढिबा F of PQ एठी पड़छि कते ए पॉइंट अबाउट 0 नहीं जाओ ए पॉइंट अबाउट 0 नहीं गले एटा होछि L एटा होछि L तो F of PQ into L will be बराबर हबो F into L तो L L कटि गला F of PQ आसीबो F रो बराबर तो आंसर F हो जिवो Identify the members with zero force member in the following. Zero force member के लागुची डीसी डीए तो हबो DCD एटा EB तो भी गोटे जो एडी तो एटा गोटे एटा देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर परिबो फास्ट तो एटा कटि गला नॉन ऑफ EB द भी एबव सबुथिरे देखो एडी अछि एडी अछि एडी अछि सीडी ताले ना एटा कटि गला एडी EB डीसी जो अछि खाली देखो ईबी को देखो आउ सीई को देखो एटा होछि सीई 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 टा जीरो फोर्स हबो ना हबनी सर ना हो इबी देखि कि लागुछि एठी गोटे 100 EB ऑलरेडी पडिछि एठी यदि ने समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करबा तो हबो ही नहीं तो ईबी ही परिबो तो ऑप्शन ए 86
द मेंबर्स फार एंड जदि फिक्स्ड हला फार एंड फिक्स्ड हेले केते 4 EI by L फार एंड हिंज हेले 3 EI by L तो बी जॉइंट रे देखो बी जॉइंट रे गोटे होउची बी ए आ गोटे होउची बी सी आ गोटे होउची बी डी बी ए टा कोन हे जबो 4 EI by L जेतो फार एंड फिक्स अछि 4 EI by L बी सी टा कोन हे जबो फार एंड हिंज अछि 3 EI by L बी डी टा कोन हबो फार एंड फिक्स्ड अछि 4 EI by L तापरे समस्त को मिसै दियो समस्त को मिसै दियो केते होउची 11 EI by L 11 EI by L बट L आउ E तो सेम नहीं एठी देखो सेठी धोका एठी देखो मार्क करो एठी 2 EI अछि कि नहीं ता माने फास्ट ता केते आसीबो जो BA पाई देखो EI by 2 तो EI जगह रे कोन बसबो EI by 2 बसबो कि नहीं EI by 2 बसलेटा केते हे जबो 2 EI by L सेटा होची एग्जाम रो मेन पॉइंट ए क्वेश्चन रो से जिंस को फाइंड आउट करबा आ एठी देखो 2 EI बसिची 2 EI बस माने एटा केते हे जबो EI जगह रे 2 EI हे जबो 6 EI by L एठी जेमिथिला सेमिथ रो 4 EI by L वर्तमान एकु मिसेबो 6 4 10 2 12 जोड़ा 11 करियो देखो 11 गोटे ऑप्शन रे अछि जोड़ा भूल करो सेटा ऑलरेडी गोटे ऑप्शन रे थिबो सर सेटा 12 E रो EI वैल्यू upon L E रो वैल्यू सर EI by 2 ना जोठी EI बसुथिबो EI जगह रे फॉर एबी मेंबर EI by 2 बसेबो जोठी EI अछि BC मेंबर केस रे 2 EI बसेबो आ एठी होची खाली EI होची कोन को स्टिफनेस EI GJ इसो को स्टिफनेस AE होची एक्सियल रिजिडिटी AE होची कोन एक्सियल रिजिडिटी EI होची फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI होची फ्लेक्सुरल रिजिडिटी GJ होची टॉर्सनल रिजिडिटी तो आंसर हे जिवो ml upon 12 EI जल्दी जल्दी देखि कि फिगर वाइज समस्त भल से देखो समस्त क्लियरली देखा जाउची एटी EI by 2 लेखा हिची एटी 2 EI लेखा हिची एटी खाली EI लेखा हिची B जॉइंट रे फॉर BA मेंबर पाई नॉर्मल फार्मूला होची कोन फार एंड जदी फिक्स अछि 4 EI by L बट एटी EI जगह रे हम कोन पुट करबा 4 EI by 2 पुट करबा into L 4 EI by L 4 EI by L तो एटा केते हिजो 2 EI by L सेही पडी B जगह रे EI जगह रे 2 EI पुट कले कोन हे जिवो 6 EI by L सेमिति B C गला सेमिति BD टा कोन हे जो फार एंड फिक्स हो जेटा खाली EI होची 4 EI by L तो ए सब को मिसे देले कोन हे जिवो 4 6 4 10 2 12 12 EI by L हैला 12 EI by L एटा होची कोन टोटल स्टिफनेस तो मोमेंट इज इक्वल टू K into थीटा से पचाजी रोटेशन केते रोटेशन मोमेंट इज इक्वल टू K into थीटा तो थीटा इज इक्वल टू M upon K सेटा उल्टी जीवो खाली M upon K M upon स्टिफनेस होची केते भाला हमर 12 EI by L ऊपर पळले कोन हे जिवो ML upon 12 EI M is equal to K into theta क्वेश्चन ले पचाजी थीटा केते को K होची स्टिफनेस थीटा होची रोटेशन M होची मोमेंट 87 87 कौन हो द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी टीएस आउ डीके पचार आगे कौन कर आरी बाहर कर दो आरी केते 3 + 2 + 2 7 तापर जेहेतु फ्रेम स्ट्रक्चर अछि तो 3c - r r पके परिबे ds =
फास्ट ds e बाहर कर दो, दैट इज योर re minus 3. स्टैटिक इनडिटरमिनेसी पचाउछि आ गोटे काइनेटिक पचाउछि. काइनेटिक होछि 3j minus re minus m. j होछि नंबर ऑफ द जॉइंट. तो ds e केते जो re minus 3 7 3 गला 4. ds i केते जो 3c minus rr. c होछि नंबर ऑफ द लूप 0 हे जिवो. rr तो कोन से रिलीज रिएक्शन नाही. ताले ds केते हे गला. ds हे गला 4. ds हे गला 4. ये ऑप्शन कटि गला, ये ऑप्शन कटि गला. आइदर ए हबो नले डी हबो. तापर डीके को जिवो. डीके रो फॉर्मूला इन केस ऑफ द सेम केस रे केते pj minus re. जॉइंट केते 1 2 3 4 5 6. 3 into 6 18 minus केते एटा re 7. 18 minus 7 केते हे गला 11 हे गला. तापर मेंबर केटा 1 2 3 4 5 5टा मेंबर. नेग्लेक्टिंग एक्सेल इनफॉरमेशन दे दीजिए. 11 minus 5 6 होचे आंसर. तो ds भाला 4, dk भाला 6. ऑप्शन बी. According to Terjaghi, foundation is shallow. Foundation shallow केतलो कहबा df is less than equal to b. Option A. Option A. 89. The ultimate bearing capacity is. Ultimate bearing capacity का कहबा. Ultimate bearing capacity. The minimum gross pressure intensity at the base of the foundation at which the soil fails in shear. That is the ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity ର actual definition होची कौन? It is the maximum gross pressure at the base of the foundation. जोटा कि हमें apply करि परिबा without shear failure. नहले हम कोन करि पार? It is the minimum gross pressure at which soil just fail करिवो. Option B. 90. The Unified Classification UCSC. The Unified Soil Classification System is based on the recognition of the type and predominance of the constituents considering Gradation. gradation, either well graded nor poorly graded. 91. Which one of the following coffer dam कोठी यूज करा जाय ब्रिज मान करे. जेटा हमें ब्रिज करंती डैम करंती सेठी हमें पानी को अटकिया पे ଗୋଟେ टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार करन. दैट इज योर कॉफर डैम. Which one of the following coffer dam is suitable for small height? Small height पई कोटा suitable. Cantilever बेसी shift हाइट करना. हेले कैंटिलीवर यूज कर परिबानी. कैंटिलीवर सीट पाइले हम यूज करिया फॉर स्मॉल हाइट पई. ऑप्शन ए. दिगल कोटा कोजनी सर हाइट जो अधिक होला हाइट जदी डिपेंड कोचे. हाइट जदी तमरो 6 रु कम हैला कैंटिलीवर यूज करिवो. जदी मॉडरेट हाइट अछि देन डबल वाल कफर डैम यूज करिवो. जदी हाइट तमरो 6 रु अधिक हैला सेटा में ब्रेसिंग यूज करिवा. ब्रेस्ट कफर डैम हैला. आहुरी कफर डैम अछि गोटे हो जदी 20 25 मीटर अधिक हैला सेटा में सेलुलर कफर डैम यूज करिवो. By means of Bossinet's stress distribution theory, which one of the following pressure distribution diagram can be prepared? Bossinet's vertical stresses in soil KB ର formula कौन थिला? 3 by 2 pi whole into 1 by 1 plus r by z ର whole square to the power 3 by 2 ना 5 by 2? 5/2. KB into q by z square थिला तमरो stress due to Bossinet's. कौन हो Bossinet's अनुसार? Vertical pressure distribution on a horizontal plane. Vertical pressure distribution on a horizontal plane. এই ভଳି আসଥିଲା डायग्राम.
R by Z ର ରେସିଓ କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ stress of bossiness will be equal to stress of Westergaard? এটা ଗୋଟେ short question ପଚାରେ ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନେ ଏବେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ସଲ୍ଭ ଚାଲିଛି Bossiness equal to Westergaard when R by Z ର value 1.52 ମନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା vertical stresses in soil ଏଇ ଦି ତିନିଟା short question either formula ପଚାରିବ ନହେଲେ influence factor ଉପରୁ question ପଚାରିବ IF ର formula 1 by m into n ଆଉ କିଛି question ନାହିଁ option B 93 which one of the following is the cause of waterlogging ର cause option D submergence due to flood waterlogging କରିବ 94 which of the following is a very effective method to control waterlogging को control କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ effective Option method? A. Option A. lining of canals Kennedy ଆଉ लेसी କୋଉ canal ପାଇଁ applicable lined ନା online ऑनलाइन सर online 95 with standard notations the total subsurface soil area required for the soak pit dispersion trenches is given by 130 Central Public Health of Environmental Engineering Organization 130 into 130 by T रो root over Q ରହିବ liter per meter square per day रे T होଉଛି percolation rate minute per centimeter 96 Which one of the following is an essential requirement of swimming pool water swimming pool ରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ Option B, minimum amount of minimum amount of the chemical should be added in treating water for the swimming pool option B कारण swimming pool रे public use तो बेसी chances ଅଛି contaminant हबार 97 The number of simultaneous equation to be solved in the slope deflection method is equal to केतेटा number of simultaneous equation थाए to be solved in the slope deflection equation जेतरा जॉइंट थिबो तटा इक्वेशन आसीबो कि नहीं जेतटा जॉइंट थिबो सेतटा इक्वेशन आसीबो 98 maximum size of a fillet weld for a plate of square edge maximum size केते जेते की thickness रहइबो प्लेट रो ताठू केते कम रहइबो 1.5 1.5 mm कम रहइबो